Hello, my dear students. Jai Jagannath. Welcome to the session. So today we are going to study about learning and teaching the Unit 4 teaching process. That first time start करिए 4.1 the concept of teaching, teaching as a profession and teacher as a professional, teaching as an art and science. The first time देखिए concept of teaching. Before we know concept of teaching, at first we know what is the teaching. Teaching कहले हमें कौन बुझी था? अब basically teaching means होची in learning you will teach and in teaching you will learn. So basically कौन ना जो जिनस आमे निजे लर्न करबा को स्टार्ट करबा ताको आमे काहा को टीच करि परिबा जो जिनस आमे निजे सिखिथिबा ताको आमे काहा को सिखै परिबा ओके देन and in teaching you will learn. तो जो कोनसे जिनस तमे आउ काहा को भी सिखेबो तो सेतरु तमे भी किछि सिखि परिबो ओके देन हमें जानबा टीचिंग कहा कहा भीतर हेता है ओके तो टीचिंग कहते ना माने गोटे मोर एक्सपीरियंस पर्सन जे हेथांती जे कि माने जने अधिक ज्ञानी लोक होइतांती से गोटे लेस एक्सपीरियंस पर्सन को को करतांती ना तांकर ज्ञान बांटी थांती तो टीचिंग कांसेप्ट ता बा टीचिंग जो हमें कहिथाउ जे शिक्षकता बा टीचिंग जो अन्य को सिखेबार जो शैलीटा सेटा से दी जनक भीतर हेथाय जे कि अधिक एक्सपीरियंस पर्सन हेथांती से लेस एक्सपीरियंस पर्सन सहित तांकर ज्ञान को आदान प्रदान करथांती कम पई ना तांकर वैल्यू एटीट्यूड एट्रिब्यूट ओके मोराल स्किल ए सब सिखेबा लागि जोथरे कि कहैताय ना जो जे लेस एक्सपीरियंस पर्सन तार बिहेवियर चेंजिंगनेस आसी थाए एवं से निजको ठीक भाबरे माने गोटे प्रेजेंट वे रे निजको गढी तोली थाए ओके देन हम जानबे कोन ना Teaching is a process, learner, teacher, curriculum and other variable and organized. Teaching को छोटे एमिति का process जो थी कि कौन ना learner रहबा दरकार, teacher रहबा दरकार, curriculum रहबा दरकार और other variable सब organized way रे रहबा दरकार ओके जा द्वारा कि कहि परबे ना teacher सहित learner भी motivate रहबा और teaching system टा clearly हेई परबो then traditional role कौन ना आग काल जुगरे कहउतला टीचर सेंटर होतला ओके जोथरे कि केवल टीचर मानक ऊपर फोकस रहउतला पिला माने निजर किछि भी स्किल को से माने डेवलप करि पार नथिले केवल टीचर माने ही तांको हिसाब रे करिकुलम से बनाउथिले पिला को माने चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन सेतबेले नथिला सेतबेले टीचर सेंट्रिक थिला ओके देन मॉडर्न रोल एबेकार रोल कोन रहउची ना पीपल सेंट्रेड माने पिला मानक माने चाइल्ड सेंट्रेड रहउची जोथरे कि पिला मानक हिसाब रे को बना करिकुलम बनाबो पिला मानक हिसाब रे एजुकेशन सिस्टम को सेट कराबो पिला मानक हिसाब रे क्लासरूम अरेंजमेंट हबो माने पिला मानक हिसाब रे जेमि पिला मानक सुइटेबल हबो से हिसाब रे एनवायरनमेंट भी क्रिएट हबो ओके देन असला टीचिंग एज ए प्रोफेशन टीचिंग इज डेफिनेटली ए प्रोफेशन आज इट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल ओके तो पिला मानकर स्किल डेवलपमेंट पे टीचिंग होची गोटे प्रोफेशन जो थी कि कोन ना वैल्यू फॉर स्टूडेंट्स इन देयर रेस्पेक्टिव सोशल रिलेशनशिप तो पिला माननको वैल्यू सिखा जिवो पिला माननको मोरल एथिक्स सिखा जिवो पिला माननको सोसाइटी रे केमिति निजको गोटे सुइटेबल पर्सन है कि प्रेजेंट करियको हबो से सब सिखेबा होची कार दायित्व ना टीचर मानकर दायित्व देन however the one of one interaction between student and teacher in the main element in the process of teaching तो वन बाय इंटरेक्शन जो होता है फर्स्ट टीचर किछि कहबे देन स्टूडेंट किछि कहबो टीचर किछि क्वेश्चन करबे स्टूडेंट तार आंसर करबो स्टूडेंट क्वेश्चन करबे टीचर आंसर करबे ओके ए जो इंटरेक्शन रहला वन बाय वन इंटरेक्शन सेतरे कोन ना सेटा होची मेन एलिमेंट होची प्रोसेस ऑफ टीचिंग रो देन characteristics of teaching profession कोन ना इट हैज लॉन्ग टर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर ए जॉब रोल ओके then it should cater needs of the society and a nation ई सोसाइटी पे दरकार एवं गोटे पिलार जॉब ओरिएंटेड भी से शिक्षा ग्रहण करथाय देन हमें जानबा कोन ना Teaching is the specialized application of knowledge, skill, and attribute designed to provide unique service to meet the educational need of the individual and of the society. Okay. तो टीचिंग हो गोटे स्पेशलाइज एप्लीकेशन जो कि नॉलेज स्किल एट्रिब्यूट डिजाइन ए सब यूनिकनेस सर्विस ए सब पिला मानक प्रोवाइड करा जिवो जो कि पिला मानकर एजुकेशनल नीड आ इंडिविजुअल डेवलपमेंट सोसाइटी रे ठीक भाबरे हे परिबो देन टीचिंग इंस्ट्रक्शन इज आउटसाइड द लर्नर तो टीचिंग कौन करता है ना लर्नर आउटसाइड को भी माने डेवलप करे थाए देन लर्निंग इज इंटरनल टू लर्नर तो शिक्षण कौन ना पिलार माने अंतःकरण को भी ठीक भाबरे सजाड़ी थाए देन टीचिंग एम्फसाइज द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू एंड गाइड स्टूडेंट इन देयर सोशल रिलेशनशिप तो टीचिंग कोथरे साहाय्य करता है ना पिला मानको गाइड करिबारे से मानको वैल्यू से मानको बुझेबारे सोशल रे से माने केमिति पिला मानको गाइड करियबो कैसे सब बुझे थाए देन
Teaching is the communication between two or more persons who influence each other by ideas and learn something, the new process of interaction. Now, teaching ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତିକା communication ଯୋଉଟା କି ଦିଟା person ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥାଏ, ଜଣେ more experienced person ଆଉ ଜଣେ less experienced person. Okay. Then there should be social accountability. Okay. There should be some ethical norm and consideration. Okay. ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଯେ professional association ବି ହେଇପାରେ. There should be autonomy and self regulation. ତ ପିଲାମାନେ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ରେଗୁଲେସନ ହିସାବରେ ଟିଚିଂ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ. ଦେ ସୁଡ୍ ବି ଫ୍ରିଡମ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ରିଜନେବଲ ଫି ଫର ଦ ସର୍ଭିସ. ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା professional commitment କଣ ନା teacher should give priority to professional commitment and development. Then teacher କଣ କରିପାରିବେ ନା teacher should be enthusiastic towards teaching and learning. ତ teacher को କଣ ନା ତାଙ୍କ teaching profession ପ୍ରତି ସେ ଉତ୍ସାହୀ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି କଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର good impact ପଡିବ. Teacher should have positive outlook and sympathetic attitude towards the children. ତ basically teacher ଙ୍କ role କେମିତି ହବା ଦରକାର ନା ଟିଚର ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହବା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ମାନେ ପ୍ରତିଚଳିତ ହବା ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ରୋଲ ମଡେଲ ଭାବରେ ଭାବିକି ନିଜକୁ କଣ କରିବେନି ସେଇ ହିସାବରେ ଗଢି ତୋଳିବେ. ମାନେ ପିଲାମାନେ ଟିଚରଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରେସନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମିତି ପଡିବ. ତ ଟିଚର ମାନେ ସିମ୍ପଲିଫାଏ ହେବା ଦରକାର, ସେମାନେ ସିମ୍ପାଥେଟିକ ହବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ସେମାନେ ଗୁଡ ରଖିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ରଖିବା ଦରକାର. ଓକେ, ତ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବିଲିଟି କାପାସିଟି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଡ୍ ଆଉ ୱିକନେସ୍ ହିସାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲେଭେଲ ଅପ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିଚିଂ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ. ଦେନ୍ କଣ ନା ପ୍ରଫେସନାଲ ନର୍ମ କଣ ରହୁଛି ନା କୋଡ୍ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଫେସନ ଅଫ ଭ୍ୟାଲୁ. ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କର ଟିଚର ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟନେସ୍ ଠିକ ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର. ଦେନ୍ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ଦ ପ୍ରୋଫେସନାଲ, କିଛିଟା ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ମାନେ କଣ୍ଡିସନ ରଖିକି କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଷ୍ଟଡି କରେଇବା ଦରକାର. ଦେନ୍ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି କଣ ହବ ନା ପିଲାମାନେ ମୋଟିଭେସନରେ ରହିବେ, ପିଲାମାନେ ସେଇ ମୋଟିଭେସନ ୱେରେ ଷ୍ଟଡିକୁ ଆଗେଇ ନେବେ. ଦେନ୍ ରୋଲ ଅଫ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି, ଟିଚର ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଉ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ନିଭେଇବା ଦରକାର. ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଣ୍ଡ ବିଲିଭ୍ସ ଫର ଦ ପ୍ରଫେସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ. ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ ନା professional ethics, attitude toward the profession. Now, it is the teacher primary duty to say sincere and honest in work and go thoroughly prepared to the class, not to say anything which may lower prestige in the eyes of the student, to engage them into private tuition, not to act an agent or to accept commission and other compensation for recommending books. Okay, so teacher ମାନେ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଏଥିକ୍ସ ମୋରାଲ ଏଥିକ୍ସ ସେମାନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏବେକା ଟାଇମରେ ଯୋଉ ହଉଛି କଣ ନା ଟ୍ୟୁସନ କରିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମନି ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଯାଉଛି. ଓକେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ୟୁସନ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଟେନସନ ଦିଆଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଇଜନେସ୍ ଠିକ ରହୁନି. ଓକେ, ତ ସେଠି କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ମୋରାଲ ଏଥିକ୍ସ ହିସାବରେ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର. ଓକେ, ଦେନ୍ ଟିଚିଂ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟ, ତ କଣ ନା ଟିଚିଂ ହଉଛି ଗୋଟେ କଳା ଯୋଉଥିରେ କି କଣ ନା ଟୁ ଡିସମିନେଟେଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ. ଓକେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଠିକ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେନ୍ସ ବି ଠିକ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଟିଚରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଗୁଡ ଭାଇବ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହବ. ଦେନ୍ ଟୁ ଡିସାଇଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଦ ଲର୍ନର. ଦେନ୍ ଟିଚର ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏମିତିକା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ମାନେ ମାଟି ପାତ୍ରକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଠିକ ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଣ ନା ସେ ମାନେ ମାଟି ପାତ୍ରଟି ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଟି ପାତ୍ର. ଓକେ, ତ ଟିଚର ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ କୁମ୍ଭାର. ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଟିଚର ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଏମିତି ମଡେଲିଂ କରିଥାନ୍ତି ସେ ମାଟି ପାତ୍ରକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାଟି ପାତ୍ର ହେଇକି କ୍ରିଏଟ ହେଇଥାଏ. ସେଇ ହିସାବରେ ଟିଚର ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଏମିତିକା ଜିନିଷ ଯିଏକି ପିଲାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ କ୍ରିଏଟ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇକି ସମାଜରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇଥାଏ. ଦେନ୍ ଟିଚିଂ ଆଜ୍ ଏ ସାଇନ୍ସ, ତ କଣ ନା ଟିଚିଂ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉଥିରେ କି କଣ which there are many strategies and practice. Teaching ରେ ବହୁତ strategy ରଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ, practice ବି ଦରକାର ଥାଏ. just like doctor teacher should be research to information their practice. ତ ଜଣେ experienced ମାନେ teacher ହେଲେ ଜଣେ ବାର ବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ practice କଲେ ହିଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରିବ. ଓକେ, ତ ଜଣେ ଯଦି less practice ମାନେ person ହେଇଥିବ ତ ସେ କେମିତି ଠିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉଟପୁଟଲି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରିପାରିବ. ଓକେ, ଦେନ୍
टीचिंग एज एन आर्ट टीचिंग होची गोटे कला समस्ते टीचिंग देई परिबेनी ओके ना ही समस्ते ठीक भाबरे गोटे लर्निंग सेंस को ठीक भाबरे ग्रहण करि परिबे समस्ते गुड लर्नर हेई परिबेनी कि समस्ते गुड टीचर भी हेई परिबेनी तो से टीचिंग होची गोटे कला लर्निंग होची गोटे कला देन टीचिंग इज एन आर्ट इन व्हिच लर्नर मस्ट बी ब्रिंग देमसेल्फ फुली इनटू देयर टीचिंग तो फोकसफुली टीचर मानको स्टूडेंट के प्रति कोन ना एमती गोटे माने एक्वेंटेबली लर्निंग माने टीचिंग दबाको पड़िबो जोथि कि स्टूडेंट माने को से माने प्रभावित होई कि टीचिंग सेंस को अडॉप्शन करबे माने एक्विजिशनली से माने टीचिंग को कोन करबे ना निज भितरे ठीक भाबरे से माने एप्लीकेबल करबे देन टीचिंग एज एन आर्ट मैं जानिले then janiba kono na teaching as a science teaching is an applied science because it incorporate okay systematic and methodologically approach teaching hoch gote systematic approach jothire ki kon na system and method rahi thai the experimentation and the trail then the probing and answering the basics of teaching learning process then ame janiba kono na teaching required both art and science so teaching hochi kona na both art and science so basically teaching is a broader in term and include training instruction so that student can learn properly okay in teaching there are so many method model theory strategy to be used by teacher to enhance the learning or transfer the knowledge अब एबे का कौन होची ना टीचर माने टीचर और टीचिंग सिस्टम को एमिति हबा आवश्यक जोथरे कि कोन ना टीचर माने निजको एमिति भाबरे पिला मानक ऊपर व्यू पॉइंट समानकर रखा दरकार जादर कि पिला माने ठीक भाबरे तांको माने लर्निंग सेंस को से तांको टीचिंग सेंस को पिला माने ठीक भाबरे लर्न करि परिबे ओके प्रॉपर्ली देन इन टीचिंग देयर आर सो मेनी मेथड टीचिंग में कोन बहुत प्रकार मेथड यूज हबा दरकार जैसे कि मॉडल थ्योरी स्ट्रेटजी ओके एबे तो टेक्नोलॉजिकल जुग जथरे कि हमें एआई आ माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को माने व्यवहार करी कि हमें बहुत बेटर वे रे टीचिंग को हमें कौन कर परछे ना प्रोवाइड करि परछे देन distance between instruction training and teaching kono na first ଆମେ ଜାଣିବା instruction kono as instruction have the meaning to just give direction to follow something to show authority to follow the rule and regulation of the classroom तो basically instruction कहले ଆମେ कौन बुझिताउ ना टीचर माने पिला मानको एमिति instruction दवा दरकार जोथरे कि पिला माने ठीक भाबरे ठीक माने तांकर स्टडी लेवल को से माने नै पारुथिबे ओके तो टीचर मानको instruction भी ठीक होबा दरकार मोर एक्सपीरियंस होबा दरकार जोथरे कि ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇ ପାରୁଥିବେ ଦେନ୍ ଟ୍ରେନିଂ କଣ ନା ଟିଚର ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବା ଦରକାର ସେମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍କିଲ୍ ହେବା ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ କଣ କରିପାରିବେ ନା ତାଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ କୁ ସେମାନେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗରେ ରଖିପାରିବେ ଓକେ ଦେନ୍ ଠିକ ମେଥଡରେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କରିପାରିବେ ନା ଟିଚିଂ ଦେଇପାରିବେ ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ ନା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ ଜାଣିଲେ टीचिंग इज इम्पैक्टिंग नॉलेज इन स्टूडेंट फॉर्मली एंड इनफॉर्मली तो टीचिंग टा कौन स्टूडेंट को नॉलेज को फॉर्मली अफेक्ट करता है इनफॉर्मली भी अफेक्ट करता है देन टीचिंग बेसिकली परफॉर्म इन क्लासरूम नाउ बेस ऑनलाइन ओके तो बेसिकली एबे कौन होची ना टीचिंग टा को हमें परफॉर्म करछु कोथि ना क्लासरूम में आ एबे का समय रे कौन ऑनलाइन ने देन दिस इज कॉम्प्लेक्स और ब्रॉडर ओके तो बेसिकली टीचिंग होची गोटे कॉम्प्लेक्स जिंस आ ब्रॉडर माने बहुत बड़ देन teacher has a trained to teach well or they are professional to impact knowledge तो basically teacher जोड़े trained person हवा दरकार जोथरे कि से ठीक भाबरे टीच करि परिबे आ गोटे प्रोफेशनल वे रे से माने स्टूडेंट को प्रति नॉलेज रे इंपैक्ट देई परिबे ओके देन हमें जानबा कोन ना phase of teaching कौन ना pre-active planning stage interactive execution stage then post interactive कौन ना evaluation फीडबैक स्टेज तो बेसिकली टीचिंग फेज एमिति हो दरकार जे फर्स्ट जेते टीचर्स क्लास को एंटर करिवे तो से प्री एक्टिव किछि करिवे जोथरे कि से पिला मानको टॉपिक सहित किछि एक्वेंटेड जिंस पचारिबे टॉपिक सहित एक्वेंटेड करेबे पिला मानकर अटेंशन आगो टीचर नेबे ओके देन टीचर कोन करिवे ना टॉपिक ऊपर जेते जिबे से पिला मानको सहित इंटरैक्टिवनेस आनिबे जोटा कि एक्सिक्यूशन स्टेज ओके सेतिर को हबो ना टीचर स्टूडेंट सहित इंटरेक्शन करिवे क्वेश्चन सहित आंसर सहित क्वेश्चन एवं किछि टॉपिक रिलेटेड ओके देन असला कोन ना पोस्ट इंटरैक्टिव देन टीचर कोन करिवे ना पिला मानको इवैल्यूएशन करिवे को पिला केते बुझी पारिले को पिला केते बुझी पारिले नाही ओके पिला मानकर फीडबैक नेबे पिला मानकर आंसर कोन होची पिला माने को मात्रा रे माने तांको टीचिंग सेंस को तांको से माने एक्सेप्ट करले ओके देन हमें जानबा
phase of teaching, planning, execution and reflection. कौन ना phase of teaching कौन? Teaching is a very complicated task and for the completing this task proper management and strategy is important. तो teaching होଉଛି ଗୋଟେ complicated task sorry complicated task जोथिरे कि कौन ना proper management हिसाब रे बा strategy हिसाब रे हमको teaching देबाको पड़िबो. Then the teaching can be systemized into different phases described by Philip V. Jackson. Okay, तो Philip V. Jackson को कहले the teaching can be systemized into different phases described by Philip. तो teaching गोटे एमितिका systemize हो दरकार different phase रे. Okay, गोटे होची कोन ना pre-active, interactive and post-active. तो ए सब फेज रे टीचिंग को हमको डिस्क्राइब करिया को पड़िबो जादरा कि कोन ना पिला माने ठीक भाबरे ताका टीचिंग सेंस को एक्वायर करि परबे. तो फर्स्ट प्री-एक्टिव कोन ना इन द स्टेज टीचिंग प्लानिंग एंड परफॉर्म द इंक्लूड ऑल द एक्टिविटी दैट आर नीडेड इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. तो टीचर माने एमिति एक्टिविटी करिया दरकार जादरा कि से माने फर्स्ट टॉपिक ऊपर को जिबा आगुरु से माने पिला माने को सहित इंटरेक्शन द्वारा कोन करबे ना टॉपिक रो किछि माने previous knowledge पिला मानको से माने जणेबे. Okay, knowing the student कोन teacher can diagnose the student for the previous knowledge for a particular topic. Then आमे आसिया कोन ना initiation कोन response कोन ना it means that when student asks question teacher responds and when a teacher asks something the student react. Okay, so basically teacher जहा पचारबे student ताको response करे दरकार और teacher जहा question करबे तार response student तार भी आसबे दरकार. Okay, then आमे जणबे pre active planning stage कोन ना goal and objective. First to teacher decide the goal why each particular topic or content. Okay, then asla interactive education stage jota kon this phase is also called the execution phase because what is planned in pre-active phase in executed in the phase. So pre-active phase re jota amara planned heitbo seta interactive phase re kon na fruitful habo. Okay, so basically topic ro eti interaction habo, elaboration habo, topic सहित पिला माने कोन करबे ना ते माने familiar हेबे. Then this phase can be occur in classroom, laboratory, library, outdoor environment. Okay. Then हमें जानवा कौन ना selection and presentation of stimuli. कौन ना teacher select and present the stimuli. They present in a way what pre-planned and modify as per the need of student and situation in the class. तो क्लास रो एनवायरनमेंट को देखी क्लास रो सिचुएशन को देखी प्री प्लानेड हिसाब रे क्लास को मॉडिफाई करके टीचर टीच करेबे. ओके, द टीचर कैन चेंज द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस ऑफ स्टूडेंट. द टीचर कौन से मूड तरे भी तांकर टीचिंग वे को से चेंज करि पारिबे. देन फीडबैक एंड रीइन्फोर्समेंट कोन ना फीडबैक एंड रीइन्फोर्समेंट डिपेंड ऑन द रेस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट. तो पिला मानकर रेस्पॉन्स रे ही फीडबैक ता निर्भर करि थाए. Then asla post active jota ki evaluation and feedback stage kon na the phase is also performed to check if expected behavior it achieve or not. So basically माने टीचर चेक करिवे जे जो सब परफॉर्मेंस से देले जो सब टीचिंग सेंस से माने पिला मानको प्रोवाइड करे से गुडे सब पिला माने ठीक भाबरे ग्रहण कले कि नाही. ओके, देन हमें जानबा कोन पोस्ट एक्टिव कोन ना इवैल्यूएशन फीडबैक तेथरे कोन हबो ना so through this step data and information is gathered on the basis of the previous step can be modified to get expect goal and objective. तो बेसिकली जदी कोन से स्टूडेंट कोन से मिस्टेकली किछि जिंस को बुझी पारि नथिबो तो टीचर कोन करबे ना माने प्रीवियस स्टेप नेबे सी पुण से स्टेप को जाके पिला मानको पुण थरे से जिंस बुझिया को ट्राई करेबे. ओके, देन रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचर एज ए मॉडल फैसिलिटेटर नेगोटिएटर co-learner reflective practitioner and classroom researcher. Okay, so basically teacher as a model. A role model is a person who inspire and encourage us to strive greatness, live our fullest potential and see the best in ourselves. Okay, तो टीचर जने रोल मॉडल हबा दरकार पिला मानक प्रति. ओके, टीचर को अपीयरेंस जेमति रहइबो टीचर को एटीट्यूड जेमति रहइबो पिला माने टीचर को सेमिति भाबे ग्रहण करिवे. तो टीचर माने पिला मानक सहित फ्रेंडली सिबलिंग हिसाब रे कोन करिया दरकार ना पिला मानक सहित मिसियो दरकार. देन टीचर एज ए मॉडल हमें जानिले they spend 6 and 8 hour 6 day in a week with student. Okay, तो basically teacher basically time ताका life रो से student मानक सहित बितेइबा दरकार. देन टीचर एज ए फैसिलिटेटर तो टीचर जने फैसिलिटेटर हिसाब रे काम करियो दरकार जोथरे कि से कोन करियो ना पिला मानकू रियल आउटपुट ऑफ कंटेंट कांसेप्ट रो जणेबे. ओके, नोट प्रोवाइड्स करिवे एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू जस्ट लिसन तो कोन करियो ना पिला मानकर कथा को सुनिबे. देन मैनेज द क्लास वेल तो क्लास को ठीक भाबरे मैनेज करिवे. डोंट एक्नॉलेज मिस्टेक पिला मानकर मिस्टेक को से माने ठीक भाबरे माने कोन करिवे ना मिस्टेक को से माने गाली न देके फिर ताको मिस्टेक को रेक्टिफाई करिवे. देन टीचर इंपैक्ट नॉलेज इन ए पर्टिकुलर फील्ड तो गोटे पर्टिकुलर फील्ड रे टीचर माने से माने स्किल्ड हवा आवश्यक. देन फैसिलिटेटर हमें जानिले
देन हमें पिलाମାନଙ୍କୁ एंगेज करेबे डिस्कशन ने ओके डिजाइन एक्टिविटी देबे कोलैबोरेशन ने एनकरेज करबे पिलाମାନଙ୍କୁ देन हमें जब टीचर एज ए को लर्नर कोन ना टीचर पिलाମାନଙ୍କୁ पढेଇବା सहित निजे ମଧ୍ୟ किछिटा नॉलेज से माने गेन करबे जा द्वारा कि से माने पिलाମାନଙ୍କୁ बेटर एक्सपीरियंस सहित बेटर नॉलेज प्रोवाइड करि परबे ओके टीचर पिलाମାନଙ୍କ सहित निजर कॉलेजेस ताकर फैमिली ताकर सिबलिंग हिसाब रे से माने टीचर को संग माने जेंति स्टूडेंट माने टीचर को संग भाबी कि से माने को सब किछि शेयर करि परथुए बिना निर्भय रे से माने किछिटा क्वेश्चन टीचर को करि परथिबे ओके देन हमें जानबा कोन ना टीचर एज ए क्लासरूम रिसर्चर तो टीचर जने क्लासरूम रिसर्चर हबा नियति बेला दरकार जोथरे कि से सब किछि माने मूवमेंट को क्लासरूम रो से ऑब्जर्व करूथिबे ओके जा द्वारा कि पिला मानकर मूवमेंट को से माने ऑब्जर्व करिकि ठीक भाबरे पिला मानकु टीचिंग रे मन लगेबे को से माने बाध्य करै परिबे जे ठीक भाबरे पिला माने टीचिंग सेंस रे से माने माइंड पुट ऑन करिबे ओके देन टीचर रिसर्च अबाउट कोन हाउ टू टीच केमिति टीचर माने केमिति टीच करिया पड़िबो रिसर्च अबाउट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन कोड डाटा आसीबो को इन्फॉर्मेशन पिला मानकु प्रोवाइड करिया दरकार ओके व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड आस्क केउ सब क्वेश्चन पिला मानकु पचरिबा दरकार केउ सब आंसर से माने पिला मानन थारु एक्सपेक्ट करबे ओके देन व्हाट टाइप ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स शुड बी प्लेड इन द स्कूल ओके केउ प्रकार गेम आउ को टाइप ऑफ स्पोर्ट्स सब स्कूल ले प्ले हवा दरकार ओके देन हमें जानबा कोन ना फंक्शन ऑफ ए टीचर इन क्लासरूम स्कूल एंड कम्युनिटी तो स्कूल ले माने टीचर कर फंक्शन कौन रोच द रोल ऑफ टीचर इन क्लासरूम कोन ना इम्पार्टिंग नॉलेज तो टीचर एज ए प्रोफेशनल हैव ए ड्यूटी टू इम्पार्ट नॉलेज इन सॉरी लर्नर तो टीचर कर माने ड्यूटी कोन ना लर्नर पिला माने को कोन करबे ना नॉलेज बांटीबे देन वर्क एज फैसिलिटेटर कोन ना टीचर पिला माने को ताको रिक्वायरमेंट हिसाब रे ताको गाइड करबे ताको फैसिलिटेट करबे देन से माने को गोल ले पहुंचिया पई देन अथॉरिटी कोन ना टीचर अथॉरिटी हिसाब रे पिला माने रूल रेगुलेशन क्लासरूम मैनेजमेंट सब किछि से माने हैंडल करबे टू कवर सिलेबस ब्रिंग प्रोफेशनल टीचर टीचर कर माने ताकर ड्यूटी कोन ना सिलेबस को कवर करके से माने को प्रॉपर वर्क करे कि पिला माने को कोन ना ठीक भाबरे सिलेबस को पिला माने को हिसाब रे लर्न करेबे देन हमें जानबा कोन the role of teacher in classroom managing the classroom management करिवे सेफ्टी फॉर लर्नर पिला मानकर सेफ्टी प्रति ध्यान देबे एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन पिला मानको कोन प्रतिटी क्षेत्र से एनकरेज करबे मोटिवेशन देबे प्लानिंग भी देबे ओके के को हिसाब रे केमिति ठीक भाबरे से अथॉरिटी नै कि पिला मानकर केमिति तक करिकुलम सिलेबस को कंप्लीट करबे ओके देन एक्ट एज ब्रिज तो teacher act like as a bridge between administration and learner because they notice the problem or need to of the learner तो बेसिकली टीचर गोटे बंधर कार्य करिवे जोथिरे कि एडमिनिस्ट्रेशन और लर्नर को भितरे जोथिरे कि से लर्नर मानकर तांका नीड तांका एक्टिविटी तांका एक्टिविटी हिसाब रे प्रॉब्लम को सॉल्व करी से मानको ठीक भाबरे एडमिनिस्ट्रेट करि परिवे देन हमें जानबा कोन ना टीचर रोल इन स्कूल को ना कंडक्ट रेगुलेशन मीटिंग को ठीक भाबरे से कंडक्ट करिवे ओके शेयरिंग नॉलेज ताकर नॉलेज को प्रॉपर वे रे मेथड रे से कोन करबे ना ताकर टीचिंग लर्निंग स्किल को से शेयर करिवे देन टीचर रोल इन कम्युनिटी एक्ट एज रोल मॉडल तो टीचर जने एमिति गोटे रोल मॉडल हवा दरकार जोथिले कि कोन ना सब किछि नॉलेज रो इंक्लूडनेस टीचर मन पाखर रहबा दरकार वैल्यू डेमोक्रेटिक वैल्यू एमंग लर्नर को से माने जेमति प्रोवाइड करि पारुथिबे ओके देन हमें जानिबा वर्क एग्नेस्ट स्टीरियोटाइप कोन ना जो सब अंधविश्वास रही जे पिला माने ए पिला माने जो माने गरीब पिला अछन से माने पढ़ी परिबे नै जाति वर्ण धर्म निर्विशेष रे टीचर को कहबा दरकार ना ठीक भाबरे सब पिला को समान दृष्टि देखि कि ताको शिक्षा को ठीक भाबरे से माने प्रोवाइड करिया दरकार देन टीचर रोल इन कम्युनिटी कोन ना राइज देयर वॉइस एग्नेस्ट इनजस्टिस तो जे कोनोसी पिला प्रति इनजस्टिस होतबो पिला माने टीचर को समान प्रति वॉइस राइज करिया दरकार जोथरे कि ठीक भाबरे कोन ना सब पिला समान भाबरे से माने पाठ पढ़ी परिबे देन टीचर एज ए आर्किटेक्ट और इंजीनियर तो टीचर हो जते जने कोन ना आर्किटेक्ट और इंजीनियर जे कि पिला मान को ठीक भाबरे तांग सोसाइटी रे गढी तोली थांती पिला मान को गोटे माने गोटे ठीक भाबरे गोटे वेल पर्सनालिटी पिला मान को से माने कोन करथांती ना से मान को देई थांती जोथरे कि पिला माने ठीक भाबरे निज को गढी तोली कि गोटे सोसाइटी रे वेल मैनर हिसाब रे निज को प्रेजेंट करी थांती देन हमर यूनिट 4 आज कंप्लीट हे गेला नेक्स्ट वीडियो यूनिट 5 हमें स्टार्ट करबा